Hello everyone, welcome back to another video. This is lecture number 4 of this Python tutorial beginner series. So in previous video, I taught you about what are data types in Python. That is lecture number 3, part 2. This video is generally about typecasting, how we can and change into like a int to float, integer to float, float to integer. If we I want float number in integer, how we will get it. So let's see about that in this video. Let's start. What are data types? This we have revised. This we are revising here. We have done in a previous video. So I have added this PPT for only revising purpose to revise it. So let's see. I have taught this. If you have not seen the video, go and check lecture number 3, part 2, that are data types. तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप्स टाइप स्पेसिफिकेशन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था इंट फ्लोट स्ट्रिंग बुलियन ये चारों हम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और भी बहुत ढेर सारे टाइप्स होते हैं इसके तो हम लोग को बेसिकली जब चार ही समझना है उससे ज्यादा जरूरत नहीं होता है सो व्हाट इज इंट इंट दैट कंटेन होल नंबर आई लेट्स टेक विल टेक अ पेन हियर so you see. Yes, int whole numbers, no decimal point that are integer. This is called integer like 10, -5, 0, and 1000. This is integer. What are floats? Float number with a decimal point. Decimal. Here is decimal. In float, we consider decimal like 3.14. This is the value of pi minus 0.5, 2.0, 1.9. Like these are float. Generally, we say float. String like text, your name, college name, and all. We have covered this, but I am revising here so you take some glimpse of these data types. What are data types? Hello, like this, you can see here. This always inside quotes. You can see here these are in double quotes. These are important. Because of this, Python know what we have to print. If you write print of in double quotes Python, that will print a Python. So string is in double quotes. This 1, 2, 3 string. What are Boolean? Boolean only two value possible, true and false. That are Boolean. I will erase this. Yes. Live demo we have seen age is equal to oh, age is 25, price is 99, name is Rahul, active is equal to true. This if you see anywhere true, that is Boolean. What are the type of age? Oh sorry. See, print type of age. What's the type of this age? Age is 25. So what the type of this? This is integer. You can see here whole numbers, no decimal point. That is integer. See here, see. This is integer. So this is integer. Age is integer. You can see the answer also here. Below I have written the answer of this. And what is this price? Price is 99.99. So if you have to check type, simply write in print. Oh, sorry. Wait, I will erase it and we will use mouse only. Yes. Yes. You can see print type price. What is the price type? That is float. You can see here is decimal. We can see decimal.
डेसिमल नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट दैट इज फ्लोट। जहां पे भी आपको पॉइंट में दिखे 1.0 1.5, और इसको हम लोग इंट में भी चेंज कर सकते हैं जैसे इंटीजर में, उसी को हम लोग सिंपली टाइप कास्टिंग कहते हैं। चेंज करने को ही हम लोग टाइप कास्टिंग कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में। वो मैं आपको बताऊंगा आगे लेक्चर में। इसको खाली हम लोग देख रहे हैं, एक बार समझ रहे हैं। डेटा टाइप्स हम लोग ने वैसे पढ़ चुका है। ये देखिए क्लास आपको दिखेगा फ्लोट। प्रिंट टाइप ऑफ नेम। नेम क्या है यहाँ पे? ये नेम इज इक्वल टू राहुल। एनीथिंग इज इन डबल quotes, inside double quote, that is string. You simply see here text always inside quotes, that is string. So this class is string. Key inside for you. Python figures out the type automatically. use type Use type anytime to check. If you want to check the what is the type of variable, yeah, I have given here like age is equal to 99. If you want to check the type, simply write print type. Wait, write print, then type. Here inside the type, that is variable, what you have assigned here, age. You will simply get int. So this is about data types I have covered. So let's see next. What is typecasting? So let's see. Converting The definition of typecasting is converting a value from one data type. Please see and read with me also so you can remember this. Converting a value from one data type to another, also called type conversion. See, converting a value from one data type. You have a data type like int, converting to float. That is typecasting. Generally means typecasting. This typecasting. Yes. Why do we need? हम लोग को इसका क्यों जरूरत पड़ा टाइपकास्टिंग का पाइथन के अंदर? पाइथन वुड नॉट मिक्स टाइप्स केयरलेसली। पाइथन टाइप को मिक्स नहीं करता है केयरलेसली। यूजर इनपुट इज ऑलवेज स्ट्रिंग। यूजर का इनपुट ऑलवेज स्ट्रिंग होता है। मैथ रिक्वायर्स नंबर्स नॉट टेक्स्ट। मैथ जैसे इंट में ही होगा, फ्लोट में होगा, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं होगा, स्ट्रिंग में नहीं होता है वो कभी भी। ज्वाइनिंग टेक्स्ट विथ नंबर्स नीड्स कन्वर्जन। कोई भी नंबर को हम लोग ज्वाइन करते हैं जैसे 15+4, वो भी एग्जांपल में आपको बहुत ही अच्छा प्यारा एग्जांपल दिखाऊंगा अभी कि ये कैसे वर्क करता है। ज्वाइनिंग टेक्स्ट विथ नंबर्स नीड्स कन्वर्जन। टाइप ए इम्प्लिसिट। इट्स नॉट वर्किंग। सी type A. What is There are two types generally in typecasting, that is implicit and another is explicit. We remember with me, we study, and what I am teaching you here, carefully listen it so you get easily in this series. If you आप अगर मेरे साथ बने रहेंगे इस सीरीज में, बहुत ही अच्छे से आपको पाइथन समझ में आएगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखते हैं पाइथन का टाइप। अरे ये टाइप कास्टिंग का टाइप कौन से होते हैं? इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट जो ऑटोमेटिकली पाइथन खुद से ही करता है। एक्सप्लिसिट जो मैनुअल जो हम लोग करेंगे। अभी हम मैं करके दिखाऊंगा आपको। जैसे ये इंट है, पाइथन कन्वर्ट करता है फ्लोट में। तो इंट जैसे ये इंट मेरा यहाँ पे 10, 10 मेरा एक इंटीजर है, ठीक। ये प्लस की है यहाँ पे, और प्लस के साथ हम लोगों ने लगाया है एक फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू आपको दिख रहा होगा 3.5। जब इसको हम लोग प्लस करेंगे तो 13.5 आपको आएगा। इंट साइलेंटली बिकम्स फ्लोट क्योंकि ये लेस वैल्यू यूज करता है, डेटा लेस लेता है। फ्लोट इसलिए यूज होता है कि ये लेस डेटा यूज होता है। टाइप बी एक्सप्लिसिट मैनुअल जो हम लोग करेंगे। ये स्ट्रिंग में है, इंट दिया है 25, इंट स्ट्रिंग से इंट में करके दिखाएंगे। यूज अ फंक्शन इंट फ्लोट स्ट्रिंग बुलियन। Key rule. What are the key rules for you? Direction matters like this. String to int, int to float. These are the direction. Widening, small to large is safe. What I said to you here, it int silently becomes float. This means
widening small to large. So this widening small to large is safe. Narrowing may lose data. If you narrow it, it may lose data. So why here int silently becomes float automatically. Let's go on next slide. We will see about some many examples. Let's see examples. We will discuss about implicit. Let's discuss an example. As you will open your file here. I have created already a file that is lecture 4. You also make a file. Make separate files so you can organize by separately. अगर आपको जैसे एक ही में आप बनाते जाएंगे लेक्चर लिखे हैं पाइथन उसके ही अंदर सब चीज आप फाइल बनाए जाएंगे तो आपको बहुत कंफ्यूज होगा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा इसीलिए मैं अलग अलग बनाता हूँ लेक्चर 4 का अलग है तो उसमें आपको जैसे लेक्चर 3 का आप यहाँ देखिए लेक्चर 3 है उसमें हम लोगों ने क्या किया था डेटा टाइप्स इनपुट लेके तो इसी तरह लेक्चर 4 देखते हैं हम लोग लेक्चर 4 के इसको राइट शिफ्ट क्लिक करना है आपको ये आप लोग को पता ही होगा ओपन विथ कोड आ रहा है ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये आपका वीएस कोड ओपन हो जाएगा यहाँ से हम लोग ये एक न्यू फाइल पे क्रिएट क्या करेंगे हम लोग सीख रहे हैं टाइप कास्टिंग टाइप ये ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके रहेगा अगर आप ऐसे बनाते हैं मेरे साथ सेम डॉट पी वाई क्या है एक्सटेंशन है सो लेट्स सी एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग नंबर लेट्स सी है num1 इज इक्वल टू इनपुट इन input of and we have to use double quotes here and so it will be enter number 1 हाँ तो num2 इज इक्वल टू इनपुट हम लोग लेते हैं ये एक एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है इससे आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा यू विल नो वेरी क्लियर अबाउट दिस एंटर नंबर 2 and we will do print our both numbers let's print we are doing simple like we are taking number as an input like 10 and 5 and add both numbers so what we will get I am talking about that number you can see what I have done here number 1 is equal to this input number 2 input and after that I am printing the sum of both so what you generally get what you get output of these both numbers when we are doing like this let's take a number for example 10 and number 2 that is 5 so what you will get please think about this for 5 seconds I am taking a pause let's think what you will get here you generally thought this would be 15 you are wrong see why you are getting here 105 why you are getting because you have not specified here integer this is taking input this is taking a integer value like 10 100 any number if you give अगर आप कोई भी नंबर देंगे इनपुट में तो वो लेगा ये स्ट्रिंग के बेस पे लेगा ये ना कि इंटीजर देगा हमको फिर से मैं समझाता हूँ जैसे नंबर 1 को हम लोगों ने इनपुट लिया एंटर नंबर कर
तो यहाँ पे एंटर नंबर किया 10, यहाँ सेकंड नंबर पे एंटर किया हम लोगों ने 5। तो हम लोग को आउटपुट मिल गया 105। ये क्या हो गया? कॉन्केटेनेशन इसको हम लोग बोलते हैं। द कॉन्केटेनेशन ऑफ टू नंबर दैट इज 105। दिस 105, this is called concatenation. This is not adding of two numbers. To add, we have to simply specify here of int of input like this. Then you will get your clear answer in int. See, int of. Now what we have done here, we have specified a int here. So let's run, delete this. Let's run the code. Enter number 10, enter 5. What you will get now? Simply 15, because you have specified here int. So you are getting here 15. What operation you have done here? Print num1 plus num2, that is 10 plus 5 is equal to 15. If you don't specify here int, it takes like string. Generally take it a string, because input and any number that takes only a string. If you specify here int, then you will get integer number. And let's talk about implicit typecasting. What is implicit? I told you implicit is automatically, which done automatically. This widening order, I have told you, boolean int float complex. Python promotes to the wider type of no data lost. Wider type automatically, no data lost here. Python converts automatically to avoid data loss. This is done by implicit typecasting. True. True. We have to know here what is true. True is 1, false is 0. In arithmetic, in Boolean, we can say false is equal to 0. When we give input like 1, we will get true. When we give input like 0, we will get false. Python never converts number to string. Yes, this is important. Like this, you can see here. Wait, I will this where we have to know like this. This is a failure mode. Oh, sorry. This this is a string. This is an integer. When you concatenate both numbers, generally it gives us type error. Why? Because hello is a string and 25 is a integer. So Python never, remember this line, Python never converts number to string. It never string to number is possible. We have seen about here in what where I have coding, जहाँ पे मैंने कोड किया था 105 आउटपुट आ रहा था, वो उसी वजह से आ रहा था, स्ट्रिंग टू नंबर की वजह से। उसमें हम लोगों ने देखा था हेलो प्लस 25 क्रैशेज विथ टाइप एरर। इसको एग्जांपल के साथ भी हम लोग देखेंगे, देखते हैं कोडिंग करके। इसको कमेंट आउट कर देंगे, यहाँ पे इसको हटा देते हैं हम लोग। क्या करते हैं, एक मिनट, लेट्स टेक num1 is equal to hello, hello, num2 is equal to 25. When we do print num1 plus num2, what we get? This gives a type error because both are not number and both are not a string. So we can't get any output. You can see here what we are getting a type error. This is giving us type error. Can only concatenate
string, not int, to string. If what we write here we write hello world. Sorry, world. We write when we write here world. 1 minute. Then you are getting here hello world. String plus string. You will get string. So you got this code. When you get type error, when you are trying to add hello plus 25, it crashes with type error. It can't concatenate it. It concatenate only hello plus string. That is world. When we write hello, your name, hello Ayush, it will print. But when you try to write 25 integer, it will crash. Int plus float. We can see also this example. A is equal to 10, that is integer. Let's code it. Sorry. We are learning with practical examples. So you know very carefully. A is equal to 10. And what's the value of B is 3.5. So what we are doing here, we are adding the integer and float value. So print A plus B. So you will get here 13.5. The answer is 13.5. You got it? This is very easy. If you want to check type, what I have teach you to in data types lecture, you have to simply print 1 minute, print like this, print type of. In this lecture, I have show you. In this coding, I have taught lecture 3. This, you know, na, how we are getting type. So see here, type of this and this. You are getting here float because it's prevent to data loss. ये बचाता है अपने आप को डेटा लॉस से पाइथन. यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा. पाइथन कन्वर्ट्स ऑटोमेटिकली टू अवॉइड डेटा लॉस. ये फ्लोट में ही कन्वर्ट करता है. ये हम लोगों ने देखा. और देखते हैं हम लोग. ये एक्सप्लिसिट है. जैसे एक्सप्लिसिट क्या है, यूजर से होते हैं जो हम लोग करते हैं, विच वॉज डन बाय यूजर. See this by code. Int 9.99. See, A is equal to int of 9.99. Print A. What we get here? What we you will get? I am taking here number as a float, but I am trying to change, convert in integer. So you will get simply 9. 9 would be answer. तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा आंसर में 9. बिकॉज ये एक इंटीजर है. इंटीजर को कन्वर्ट कर रहे हैं. अरे फ्लोट को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया है, इंटीजर में. तो अगर यहाँ पे हम लोग फ्लोट लिखेंगे, व्हेन वी ट्राई टू राइट हियर फ्लोट, we will get simply float value, that is 9.9. So this is the difference. And next example is you int true and false. Yes, I have told you, when you write like a what int of true, a is equal
b is equal to int of true. B is equal to int of true. सो यस, ये इंट हम लोग को क्या देगा, ट्रू। ये हम लोगों ने देखा। अब फ्लोट में जाते हैं हम लोग। जब फ्लोट भी मैंने आपको करके दिखाया है, फ्लोट ऑफ 5, व्हाट यू विल गेट 5.0। सो इसको भी देख लेते हैं एक बार कोड से। एक्स इज इक्वल टू फ्लोट, एक इंटीजर, वेट, एक इंटीजर को हम लोगों ने फ्लोट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। हम लोग फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट ऑफ एक्स। तो हमको क्या मिलेगा, 5.0। इसको भी कोड करके एक बार समझ लेंगे, 5.0। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, जीरो। हम लोगों ने एक इंट वैल्यू लिया है, इंट, और फ्लोट में चेंज किए हैं। तो ये आपको समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको भी अब अगर ये ऑलरेडी फ्लोट में है, ये वैल्यू 19.99, तो ये उसी में आएगा आंसर आपका। फ्लोट अगर ट्रू रहेगा तो हमारा क्या आएगा, वैल्यू 1, फॉल्स होगा 0। ये इन्फिनेटिव स्पेशल वैल्यूज होते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हम लोग को। एक्सप्लिसिट, is explicit string and boolean. In string, when we write 100 you will get 100, when we write 3.14 you will also get, as a, we know this is a 3.14 is float, but we are trying to convert in string, so you will get simply 3.14 value. In string true is true, string 123, this is list, you will get 123. In like this common use, join text with numbers. Age is 25, message MSG is equal to I am string of age. It takes here 25 and years old. I am 25 years old. You can type by only in VS Code. I am explaining only here. Boolean converts any value to true or false. Falsy values all return false. What return false? Zero, which is none values. False, empty set. This is none. This gives falsy values. What is truth? True, and everything else returns true. 1, -5, which has value, genuine value. Then we get true. Boolean of 0, what I say, showed here, 0 is under false category. So this will give false. This is hello. Here is written anything, that is true. Boolean. This is empty. So in empty, you can see here, here, oh sorry, here. So it will give false. So we have to not do this here. I will cover in list, tuple, set. This will separately will be covered. Real world example we can see, critical rule. Input always returns a string. Always. You have to note down this right now in your copy. Please make note. Please make note so you can remember everything very easily. We will see an example also, uh, which asked in interviews some common questions. Let's cover this first. Input always returns a wait, I will do this. By this you can see it very easily. Input what gives? Always. Note down this word, always returns a string. Always, this is always category. Age is equal to input, we are taking input as a age. Enter age, next year age plus 1. So if your age is 25, a string, so
What is here given? Type error. Oh, this is a type error because age is a string value and this is an integer value. You will get here type value. This one fix with casting. You have to specify here int. Yes, this is a true. So you will get 26. How? Age is 25. When you give input like 25 and plus 1, 25 plus 1, this will add number. This cannot concatenate it. If here is a string, then here is a string, so it will concatenate it. When you are trying to take like a 25 integer and 1 as an integer, you will get then 26, तब आपको 26 मिलेगा. ये ट्राई एक्सेप्ट ये अभी हम लोग नहीं इसको रहने देते हैं. इसको बाद में देखेंगे. ये वैल्यू एरर ये लास्ट के टॉपिक है हम लोग के. सो हाँ, अभी क्वेश्चन देखते हैं पहले. क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके. बेसिक हम लोग को आना चाहिए. जब बेसिक ही नहीं आएगा तो आगे हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे. बस बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं. ये सब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कॉमनली. सो यहाँ पे हम लोग एक नया फाइल बनाते हैं. यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल डॉट पी वाई. तो यहाँ पे ए का वैल्यू लेते हैं 11. फिर इसको कराते हैं एफ इज इक्वल टू फ्लोट. आप इसको समझते जाइए. अभी मैं कोड कर रहा हूँ, पहले आप इसको समझिए. फिर आप वीडियो पॉज करके अपने से करिएगा. ये आपको तब अच्छे से समझ में आएगा और ज्यादा. ये पहले आप सीखिए मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे. फ्लोट ऑफ ए. फिर क्या करूँगा? प्रिंट. प्रिंट ऑफ एफ. ये पहला कोड हम लोग समझते हैं क्या किया है मैंने. यहाँ पे मैंने एक पहले वेरिएबल लिया है a. I have taken here a variable that is a with a value 11, that is a integer, and I have make a variable also like f containing container, it containing a float of a. So what you will get here? You will get 11.0 because I am trying to convert it integer to float. A is integer, 11 is integer. In float, it will give us 11.0. So what I have get in here, let's check 11.0. I am getting here 11.0. This is our answer. I have some codes here. So let's see. Let's check B is equal to hex. This is a hexadecimal. HEX. We are considering this hex, which is hexadecimal. Hexadecimal of A. Then print V. What we are using here? We are using A, which we have assigned in first line, that is 11. So what's the hexadecimal value of A of 11? You generally don't know this because you are new. So in computer language, we can say 11 is a B, 10 is A value. You will know about this in digital electronics. This is assigned values, prefix values. 0x here is prefix. You don't have to see this. 0x, don't say this. See only B. This. In last, what you are getting? B. So 11 is B. In digital electronics or in computer language, we can say. Let's take C is C is equal to of a octal of A. Print C. Also print C. When we do this, what you will get? You will get 13. O 13. This is oct of A. 11. When we change 11 integer into oct, you will get 30. C. D is equal to binary. Bin. We will say bin.
Bin is binary. Zero, one. What are binary? Binary simply is understand by computers. Zero, one. This. These are called binary. Binary of A and print here. Print D. What you will get here? The binary of 11 is 1011. 0 B. Don't see this. Don't see this one. See only 101. Because this is prefix. 0 B is prefix in this Python. This our answer is 1011. So we have see about binary. Let's see about character. Character is equal to A. In ASCII value, we know what is A. A is value 65. Let's see about let's see by Python. Yes, we are taking E is equal to odd of char. Print here E. To print this character, we are using odd. This is byte array. So when you will print here, you will get simply 65. You are getting here 65, which is the ASCII value of A. B value is 66 like this. And let's try to change E is equal to 65. We are taking a number 65 and change into character like A. How we will get? Let's verify this. How A is 65. We can verify like character is equal to chr of E and print char. You will get here answer A. Let's see. You are getting here A 65. 65 why you are getting here A value is 65. Here 65 value in ASCII values. It is A. If you want to learn more about ASCII values, you can also type here ASCII values. You can read about this. It not here. Yes, you can see 65. You are seeing here? 1 minute. Yes, 65 here A, 66 B. So this is the this yes 65 A, 66 B, 67 D C, 68 D. These are the ASCII values. Let's see about one exercise here also. Print integer of 35.88. What you will get here? यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? मैंने आपको यह बताया एग्जांपल से। यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं इंटीजर। ये वैल्यू क्या है? फ्लोट है। हम लोग की वैल्यू क्या है? फ्लोट। गिवन वैल्यू क्या है? फ्लोट। हम लोग इसको प्रिंट करा रहे हैं इंटीजर में। तो हम लोग को आंसर मिलेगा 35। 35 आंसर, करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोट ये भी मैंने आपको करके दिखाया था अभी। फ्लोट ऑफ 35 क्या होगा? 35.0। ये क्वेश्चन है W3 स्कूल्स के। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं अपने लैपटॉप में ओपन करके वेबसाइट। स्ट्रिंग क्या है? 35.82। स्ट्रिंग जो है हमको एज इट इज वैल्यू देगा। जैसे 100 है 100 देगा, 35.2 है वैसे ही एज इट इज वैल्यू आएगी। ये हो गया, ठीक है। सो हम लोग ने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। व्हाट आर डेटा टाइप्स, हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये पिछले लेक्चर में। ये आपके रिवीजन के पर्पस के लिए मैंने लाया था। आपको कभी भी टाइप चेक करना होगा, प्रिंट टाइप ऑफ वेरिएबल करेंगे, आपको टाइप मिलेगा। व्हाट आर टाइप कास्टिंग, कन्वर्टिंग अ वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर, दैट इज सिंपली टाइप कास्टिंग। लाइक इंटीजर टू फ्लोट, that is implicit automatically, which is done by Python. Type B, that is explicit, which done by manual, which done by us. String to integer. See, implicit typecasting, auto conversion,
Explicit numeric conversion specs like done by us. Explicit, this is also container conversion. I have said this is not important. We will see in a like list differently and tuple in separate videos. These are the different topics. So not for this real world examples we have seen here. Thank you everyone. If you have any doubts, comment out, comment in comment box. In next lecture, we will see operators in Python. Thank you.